let's continue where we left yesterday. We were doing exercise 6.3 and we are left with just the last part of the second question. Now, if you see closely, at all the vertices of the triangle, we have vertically opposite angles. At each of the vertices, there is a cross which is forming. You can see a pair of lines intersecting with each other. That would mean that the pair of vertically opposite angles will be equal. Now, there is just one problem. The angles on the outside are marked as X, whereas in the interior, only one angle is marked, but we require the other two as well. So for convenience, I will be numbering these angles. I'm going to just number them. One of them can be marked as 1 and the second one can be marked as 2. That's what I'm going to do. So you can do the same in the notebook as well. Whenever you make changes to the figure, you're supposed to show it in your copy as well, in your answer sheet. Yes, Beta, the answer is correct. Let's see how this will work. So this is how it's given in your textbook. They have marked X here, X outside again, and a Y inside. So I'm going to mark this angle as 1 and this angle as 2. I have marked these myself, angle 1 and angle 2. Now, at each of the corners, if I show you, if I just erase the remaining part of the triangle, now you will be able to see that you have a cross. Two lines are intersecting, 1 and X are vertically opposite, so they will be equal to each other. Similarly, if I erase this part of the figure here, 2 and X will be equal. Again, they are vertically opposite. And then if I erase these two from the figure, you will see that X and Y also are vertically opposite. This is the first thing we want to observe and write down, that there are 3 pairs of vertically opposite angles formed in this triangle given to us. And then we will see what we can do next. Yes, Ranveer, the answer is correct. So angle 1 is equal to X, angle 2 is also equal to X, and Y is also equal to X. Each of these form pairs of vertically opposite angles, all 3. 1 and X are vertically opposite, these two. And angle 2 and X are vertically opposite, and angle Y and angle X are also vertically opposite. That's why these are equal to each other. We are now going to use angle sum property in the triangle. And when we use angle sum property, that means we have to write down the sum of all the 3 interior angles. Please remember, angle sum property will only be used on interior angles. So angle 1, angle 2 and Y, their sum will be equal to 180 degree. But what we have just written before we used angle sum property, we have written that angle 1 is equal to X, angle 2 is also equal to X, and Y is also equal to X. So each of these 1, 2 and Y, they are all equal to X. I'm going to replace them by X. Now my equation becomes this. X comes out to be 60 degrees. Some students have already done this. The value for X is 60 degrees, and since Y and X are equal, therefore Y will also have the same value. I hope it's clear. Anyone with any questions before we start with the next topic? Yes, Mableen. Ma'am, you have marked ma'am X plus X plus X. Ma'am, why? Right here in the beginning, we have written angle 1 is equal to X. Then angle 2 is also equal to X. Y is also equal to X. So I have written 1 instead of 1, I've written X. And in place of 2 also I've written X. And in place of Y also I've written X. Because 1 and X have the same value. So 1 की जगह अगर मैं X लिख दूं वो चलेगा. 2 और X की भी वैल्यू सेम है, तो 2 और X की जगह हम अगर चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं. Same way, Y and X have the same value. I can just remove Y and
use x instead. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Gagandeep. मैम क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में हमने x की वैल्यू सिर्फ निकाली थी, 2x की वैल्यू नहीं निकाली थी, तो वो लिखना जरूरी है 2x इक्वल्स टू 60. इन केस आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ मिसिंग एंगल्स, अगर आपको ये कहा एंगल्स की वैल्यू फाइंड करो, तो आपको 2x की वैल्यू निकालनी जरूरी है. आपका जो क्वेश्चन था वो था सिर्फ फाइंड x, इसलिए हमने वहीं छोड़ दिया. ओके मैम. There was a PDF that I shared with you yesterday to note down before we start the next exercise. Please write down that exercise 6.4 is deleted from the syllabus. We will be doing exercise. Excuse me, ma'am. Yes, Achyut. मैम एक बार क्वेश्चन 6 दोबारा शेयर कर दो. Yeah, right here, it's here. थैंक यू मैम, हो गया. Now, you want to remember that exercise 6.4 is deleted and exercise 6.5 we'll be doing. But before that, there was a note that I had shared. You want to write that down. So I'm going to discuss what we had written here, the PDF that I shared with you yesterday. It was about some special triangles and their properties, which might be helpful in solving your questions. Now, there are some things you already know and there would be some things which are new to you. For example, equilateral triangle. It's a special triangle. And what's special about it, it has 3 equal sides. That's the meaning of equilateral triangle. And all 3 angles are also equal. And the measure of each angle is 60 degrees. And then I have drawn an example here. I've drawn a triangle ABC. And I have written that triangle ABC is equilateral triangle. That would mean AB, this represents sides AB, BC, AC, equal likha hai maine. That means these are equal sides. And when I say equal sides, that means their lengths are equal. Whatever is the length of side AB will be the length of side BC, and same will be the length of side AC. You are all aware of this. And if you measure the angles of this triangle, then you will find out that each of these 3 angle A, B, C, all are equal and the value for each, their degree measure is 60 degrees. And that's why it is also called equiangular triangle. Iske angles bhi equal hai aapas mein. At any point, if you have questions, please ask. Anyone who wants to ask about equilateral triangle, anything. I think I have discussed this earlier also, maybe somewhere while writing down the types, we have written this, that equilateral triangle, each angle is 60 degrees. Okay. Now let's take up the next one. It's isosceles triangle. Isosceles triangle is one which has 2 equal sides. There will be 2 sides which are of the same length. The third side will have a different length. The angles opposite to the equal sides have the same measure. Now, this statement can be understood if we take an example here. So let's consider this triangle ABC. The sides on which I have put this mark, I have put these little marks on 2 of the sides. This means that these sides, the ones which have the same mark on them, their length is equal. So AB has a mark on it, AC has a mark on it. These 2 sides are equal, and this is what I've written here. AB is equal to AC. Triangle ABC is an isosceles triangle. 2 sides will be equal. From this picture here, I could identify कि कौन सी 2 sides equal हैं. वो sides जिन पे same mark लगा हुआ है, वो sides आपस में equal हैं. So that's why AB and AC are equal. Now this statement says that if you can identify कि ये जो sides equal हैं, इनके opposite कौन सा angle बन रहा है. तो AB और AC equal है. एक एक करके identify करो AB के opposite कौन सा angle है. Hide AB from the figure and see which angle is left. Use your hand to cover AB and see which angle BC. Cover AB. Angle BC. Angle C. Yes. If you cover the side AB on your screens, you can do it. Just try to cover AB, just AB. AB पे finger place करके आप उसको cover कर सकते हो पूरा का पूरा. Or you could use your pencil or your pen to cover it, and you will be able to see that
the angle which is left. If I erase that from the diagram, let's erase AB to identify which is the opposite side. If I erase AB, which angle is left? एंगल सी एंगल सी AB के opposite कौन सा angle है? C. C. The other side is AC. Let's erase AC now. If I erase AC, B. Angle B. angle B. Angle So B. which are the two angles we identified? हमने कौन कौन से angles identify किए? अगर मैं बात करती हूँ इस side की, इसके सामने बन रहा है angle C. Is that correct? And if I say AC, AC के सामने angle बन रहा है B. So if the sides are equal, तो उनके जो opposite angles बन रहे हैं, उनकी value भी same होगी. For example, if I give you a diagram here, let's say if I give you a triangle here. Now this is a figure for an isosceles triangle. So I say these two sides are equal, and I give the measure of this angle as 40. Let's make it at 70 degrees. And I ask you to find out X and Y. What would you do? x is equal to 70 and y is equal to 40. That's correct, Aryan. Can you tell me how you calculated? Ma'am, because B and C are equal. That's correct. That's correct. Because AB and AC are the equal sides. AB and AC are equal. How do I know they are equal? Because ये mark लगा है इन पे. So these two are equal. And their opposite angles will be equal now. ऐसा किसी भी आइसोसेलेस जैसे स्केलिन तो स्केलिंग में तो होंगी नहीं हम ना. आइसोसेलेस या इक्विलेटरल आ जाए, अगर उसमें मार्क लगा तो वो उसकी दोनों, अगर उनमें एक्स और वाई फाइंड करने को कहा तो दोनों सेम, उनकी दोनों की सेम वैल्यू आएगी. बेटा इक्विलेटरल में तो तीनों एंगल्स बराबर होते हैं ना, उसमें तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको. उसमें तो तीनों एंगल्स बराबर होंगे. अभी आपको बताया है ईच एंगल विल बी 60 डिग्रीज. आइसोसेलेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि तीन में से कौन से दो एंगल्स इक्वल हैं. देयर आर थ्री एंगल्स इन द ट्रायंगल, राइट? मैम यस गुरशान. मैम जो आप बोल रहे हो कि मैम ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, तो मैम जो 70 है और मैम जो सी वाला एक्स है तो मैम वो भी 70 का ही होएगा. Yes. This is what Aryan said. This is what this result means. Triangle में दो sides equal हैं. अगर दो sides equal होंगी तो दो angles भी equal होंगे. वो कौन से angles होंगे वो हम कैसे पहचानेंगे फिगर में से? आपने देखना है कौन सी sides बराबर हैं और उनके opposite कौन से angles हैं. तो दो side equal हैं और उनके जब आप opposite angles pick करोगे तो आपको दो ही angles मिलेंगे और वो दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो अगर मैं साइड ए बी की बात करती हूँ, ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? सी. एक्स आ गया, इसके सामने एक्स बन रहा है, ए बी के सामने एक्स बन रहा है. व्हाट अबाउट ए सी? ए सी के सामने कौन सा एंगल बन रहा है? 70 डिग्री. यस, 70 डिग्री. ए सी के सामने बन रहा है 70 डिग्री. So these two will be equal. Now to find out y, we can apply angle sum property. मुझे दो एंगल्स पता चल गए. बी पे ऑलरेडी 70 था, सी वाला भी 70 हो गया और y जो ए पे बन रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. एंड व्हेन यू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी यू विल बी एबल टू फाइंड आउट y एज वेल. यस गगनदीप बेटा, यू आर आस्किंग समथिंग. मैम एग्जाम में हमें मार्क दिए होंगे ट्रायंगल पे. It's possible. You will be given questions in assignment so that you can do. ओके मैम. Only then you Excuse can ma'am? identify. Without the mark, you cannot do the question. मैम y is equal to 40. That's correct. That's correct. Isosceles triangle. Once again, let's just go over this once again. Isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal. If in a triangle two sides are equal, two of its angles will be equal. If there are two equal sides, like in equilateral triangle. In equilateral triangle, हमारे पास तीन sides equal हैं, तो तीनों equal angles हैं. Whereas in isosceles triangle, we have
two equal sides, so there will be two equal angles. और वो angles कौन से होंगे? Out of the three angles of the triangle, two are going to be equal. But how do we identify? कैसे पता चलेगा कि कौन से angles equal हैं? For that you need to look at the sides which are equal. First thing, आप पहले ये देखोगे कि पिक्चर में कौन से angles equal हैं, और फिर आप आइडेंटिफाई करोगे कि उनके ऑपोजिट कौन से एंगल्स बन रहे हैं. So let's take a triangle here. I'm going to just mark. It may not look equal. Let's say this side and this side are equal, naming the triangle PQR. So can you tell me from this triangle which two angles will be equal? Ma'am, angle P and angle Q. Yes. Look closely. First of all, identify the sides which have the same mark on them. PQ and PR. PQ and PR. PQ and These are PR. equal, right? Identify the angles which are opposite. Q and to- R. R and Q. Yes, Q and R. R and Q are equal. इस साइड के सामने बन रहा है Q, और जो आपकी साइड है PQ, इसके सामने बन रहा है R. These two angles will be equal. Now, if you have identified these, that means you have understood what I'm saying here. पहले देखना है साइड्स कौन सी इक्वल है, फिर उनके ऑपोजिट एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं, वो इक्वल होंगे. आई होप इट्स क्लियर. ऑलराइट, लेट्स टेक. ट्रायंगल को ऐसे उसमें हम ट्रायंगल को अगर हम उसको बिल्कुल जैसे वो लाइक कि जो मतलब कि जैसे P ऊपर आ जाए, Q लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए, R राइट हैंड साइड पे आ जाए, तो फिर जो नीचे वाला होगा वही होगा. या डिपेंडिंग ऑन इक्वल साइड्स, अगर ऊपर आ गई तो फिर नीचे वाले एंगल्स इक्वल होंगे, उनको हम बेस एंगल्स बोल देते हैं. बट फिगर आपकी रोटेटेड भी हो सकती है ना, उसको टर्न करके भी बनाया हो सकता है. तो आइडेंटिफाई करो पहले कौन सी साइड्स इक्वल हैं, फिर उनके ऑपोजिट एंगल्स. आपकी बुक में ट्राई दीज दिए हुए हैं बहुत सारे इस तरह के. यू कुड ऑल्सो डू दोज इफ यू वांट, बट it's better that you do questions from the assignment. There are some try these on page number 123. I'll just show you if you want to take a look. This is page 122 right here. So can you see these triangles with same mark on them? Yes, ma'am. So you can try these. Harjot beta, I erased that figure. PQ and Ma'am, yes, Gurshan. मैम जो इनमें से ट्राई दीज का सेकंड पार्ट है, तो मैम उसमें x45 के मतलब इक्वल होएगा? No. It will be 90 degree. Let's name your triangle. Triangle का नाम रख दो. अब बताओ कौन सी sides equal हैं? पहले side AB and BC. AB है. Now identify the angle opposite to AB. AB के सामने कौन सा एंगल है? C. BC. और BC के सामने कौन सा है? Angle A. एंगल A. इक्वल होंगे. C और A इक्वल होंगे. ये वाला एंगल 45 होगा. ओके मैम. X equals to 90 degree. That's correct, Gagandeep. Very good. Okay, now let's go to the next triangle, which is a right triangle. Now, your last exercise, 6.5, is based on this triangle. So you should do this thoroughly, like everything you should know about a right triangle. First thing, a triangle in which one angle is 90 degree is called a right triangle. This is by definition कि हम कौन से triangle को right triangle बोलते हैं या फिर right angled triangle बोलते हैं. तो right angled triangle थोड़ा लंबा सा नाम है, हम angled बीच में से निकाल देते हैं, हम क्या बोलते हैं? right triangle. So right triangle is a triangle in which one angle is 90 degree. अगर आप तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो यूजिंग योर प्रोट्रैक्टर और एक एंगल आपको उसमें 90 डिग्री मिल गया, आप उस ट्रायंगल को क्या बोलोगे? राइट ट्रायंगल बोलोगे. नाउ इन द राइट ट्रायंगल साइड्स को हम स्पेशल नेम्स दे देते हैं डिपेंडिंग ऑन के हमारे राइट एंगल की पोजीशन क्या है. वी विल गिव स्पेशल नेम्स टू द साइड्स. The side which is opposite to the right angle, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल. Ma'am, please repeat. Just a minute. A right triangle is a triangle जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज बनेगा
और अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि 90 डिग्री एंगल कहाँ पे है, उसकी पोजीशन की हेल्प से हम साइड्स को स्पेशल नेम दे सकते हैं। तो जिस भी पॉइंट पे या जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसके ऑपोजिट जो साइड होगी, ऑपोजिट साइड लेनी है 90 डिग्री की। जहां पे भी 90 डिग्री मार्क्ड होगा, उसके सामने जो साइड है, उसको हमने बोलना है हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। एंड देन जिन साइड्स के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, उन साइड्स को हम बोलते हैं लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। दिस इज जस्ट अ ब्रॉड टर्म, लाइक लेग्स इकट्ठा उनको बोल दिया, 2 साइड्स बच गई, 3 में से एक को हमने हाइपोटेन्यूज बोल दिया, बाकी दोनों जो बच गई उनको हम बोलेंगे लेग्स। और अगर उनको और स्पेसिफिक नाम रख देना है तो हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। लेट्स टेक अ एग्जांपल एंड देन इट विल बी क्लियर। आई हैव ड्रॉन अ राइट ट्राइंगल हियर। मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट ट्राइंगल? बिकॉज बी पे मैंने जो साइन लगाया है, दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री। सो क्योंकि इस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्रीज है, मैं इस ट्राइंगल को क्या बोल सकती हूँ, राइट ट्राइंगल। राइट ट्रायंगल। और हमें ये भी पता चल गया कि राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, मैम बी पर। बी पे बन रहा है। अब आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? मैम एसी। AC ऑपोजिट पर साइड मैं- जो है, यस, उसको हमने बोलना है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। मैम और- एसी हाइपोटेन्यूज बन जाएंगे। Yes, AC, the side AC will be called the hypotenuse and the other 2 sides. अब कौन सी 2 sides बच गई? AC को ए निकाल, बी बी सी AB इन दोनों को हमने बोलना है legs of the triangle. लेग्स। अब इन दोनों में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हो और किसी को भी बेस बोल सकते हो। एक को परपेंडिकुलर बोल दो, एक को बेस बोल दो। हम प्रेफर ये करते हैं जो नीचे है साइड बॉटम पे, उसको हम बेस बोलते हैं, और जो स्टैंडिंग है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन अगर आप इंटरचेंज भी कर दो तो गलत नहीं होगा। दैट्स करेक्ट भव्या। I hope this is clear. You understand? यस मैम। Now, before we go further about another property of right triangle, there are 2 things you want to note down. Hypotenuse is the longest side in a right triangle. अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है और आप उसकी तीनों साइड्स की लेंथ मेजर करते हो, तो लॉन्गेस्ट होगी हाइपोटेन्यूज। ऑलवेज, जैसा मर्जी राइट ट्राइंगल हो, hypotenuse is going to be the longest side. And second thing, this is something we will be doing later also in chapter number 13, exponents and powers. But right now, I would just like to give you a quick overview कि हम जब लिखते हैं square of a number. Now, square of a number is simple arithmetic operation. अरिथमेटिक मीन्स हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो जब मैं बोलती हूँ किसी नंबर का स्क्वायर करना है, दैट मीन्स आई वांट टू मल्टीप्लाई द नंबर विद इटसेल्फ। Simply, the product of a number with itself is called square of the number, and it is written as superscript 2. सुपरस्क्रिप्ट होता है जो हम अपनी नॉर्मल राइटिंग से थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है स्क्वायर ऑफ 5। 5 हमारा नंबर है, और अगर मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके मुझे क्या आंसर मिलेगा? 25। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5। एंड हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हम बार बार ये वर्ड नहीं लिखेंगे, स्क्वायर को इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, हम सिंबॉलिकली लिखेंगे। और ये जो सिंबल यहाँ पे मैंने ऊपर 2 लिखा है, छोटा सा ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स स्क्वायर। Now just quickly calculate what will be the square of 12. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, Achyut? मैम स्क्वायर में जैसे 5 दिया हुआ है, 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। Yes. 2 से नहीं करना। मैम 144। That's correct. मैम Square of 144। That's correct. 144। 12 स्क्वायर। पहले आपको लिखना भी पता होना चाहिए। लिखना कैसे है? ये जो स्क्वायर ऑफ लिखा हुआ है, इसको यहां से हटाओ, ये ऊपर छोटा सा यहाँ पे 2 डाल दो, and then you can find out the answer. Multiply 12 with 12, the answer will be 144. ये वही वाला स्क्वायर है जब आप एरिया कैलकुलेट करते हो, साथ में लिखते थे ना m के ऊपर 2m स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर।
यस मैम। ये वही है। यस मैम। और वो Yes, क्यों ma'am. आता है? जब ma'am. आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है ना L इंटू बी। यस मैम। अगर L की वैल्यू है 5 मीटर्स और ब्रेड्थ की वैल्यू है से 2 मीटर्स, तो एरिया क्या आएगा? 10 मीटर स्क्वायर। 5 और 2 10 की मल्टीप्लीकेशन से बन गया 10, m और m की मल्टीप्लीकेशन से बन गया m स्क्वायर। सो इसलिए वो आ जाता है आपके पास। Of course, beta, of course, I can just explain what square is again. Square of any number means when the number is multiplied with itself. वैसे ये जो टॉपिक है ये आता है एक्सपोनेंट्स में। एक्सपोनेंट्स आपका 13th चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक में। हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद इटसेल्फ रिपीटेडली। आप किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते जाओ बार 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 बार, तो उससे हम क्या करते हैं, लाइक देयर आर फ्यू रिजल्ट्स दैट वी गेट। हम डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ ले रहे हैं अगर हम किसी भी नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दें, खुद से सिर्फ एक बार करना है, right? The number into itself, then the answer that you get is called square of the number. For example, if anyone multiplies 10 with 10, the answer is 100. I Yes, can say, ma'am. yes, I can say that 100 is actually the square of 10. Square. And to write it in math form, I will be using a little 2 on the top of 10. And I can write this. So 10 ma'am. square equals to 100. 100. Right? The next property that we have, a very important property, you're going to use it in this class, in next class, in 9th standard, in 10th standard, maybe in higher classes also. So this is called the Pythagoras property. Pythagoras is the name of the mathematician who gave this property. It is also called as Pythagoras theorem. Theorem is a technical term to refer to any property. So it is only used in right triangles. तो मैंने कहा था कि हम राइट ट्रायंगल्स के बारे में अभी पूरी एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ राइट ट्रायंगल्स में यूज होगी। और द प्रॉपर्टी सेज द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अभी हमने आइडेंटिफाई किया है। उस साइड का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, साइड का स्क्वायर करना है मतलब उसकी जो लेंथ है उसका स्क्वायर करना है। सो मैंने हाइपोटेन्यूज जो मेरी लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की उसका स्क्वायर कर दिया। जो आंसर आएगा इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स करने के बाद उनको प्लस करना है। इट्स अ लिटिल लेंथी स्टेटमेंट, लेट्स टेक अ लुक। मैम उनको उनके साथ ही प्लस करना है स्क्वायर्स करने के बाद, लाइक 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, 3 साइड्स हैं। यस मैम। मैम जैसे एक अलग कर लो, लॉन्गेस्ट वाली अलग कर लो। एंगल, मैम राइट एंगल है, उसके बाद 90 मल्टीप्लाई 90 कर दिया, दूसरी साइड का नो है नो 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 45। बेटा लिसन लिसन लिसन, होल्ड होल्ड होल्ड, हमें एंगल्स नहीं यूज करने, हमें साइड्स यूज करनी है। 90 will be an angle, हम एंगल नहीं यूज करेंगे, हम साइड यूज करेंगे। Just take a look at this example. This will help you understand. I have drawn a right triangle here and I have marked the sides with their lengths. मैंने तीनों sides की length भी लिखी हुई है। So if you had to identify from this triangle, can you tell me the hypotenuse? Although I have written, तो 90 degree angle बन रहा है Q पे, hypotenuse होगा इसके सामने, opposite to it. So hypotenuse PR, और उसकी length कितनी दी है मुझे? 13 centimeters. And which two sides are the legs? PQ and QR. These are the legs of the triangle. अब legs में से एक का नाम मैंने perpendicular रख दिया और एक का नाम मैंने base रख दिया। And as I told you, जो vertical वाली line है, जो standing वाली side थी legs में से, उसको मैंने perpendicular बोल दिया, और जो bottom पे बन रही थी उसको मैंने base बोल दिया। और इनकी length भी मेरे पास है। ये तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो 3 साइड्स मेरे पास आ गई, एक मेरे पास हाइपोटेन्यूज है जो 13 सेंटीमीटर्स है, एक मेरे पास परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर्स है, थर्ड साइड मेरे पास है बेस और इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर्स है। आपको इन तीनों के स्क्वायर करने हैं।
13 का, 12 का और 5 का, तीनों का करना है, लेकिन हाइपोटेन्यूज को अकेले रखना है, बाकी दोनों को प्लस कर देना है। See what I have done, मैंने h का स्क्वायर किया, h is my hypotenuse, मैंने इसका स्क्वायर किया, मींस मैंने 13 का स्क्वायर किया और मेरा आंसर कितना आ गया? 169। दूसरी तरफ मैंने किसका स्क्वायर किया? एक p का स्क्वायर किया और एक b का स्क्वायर किया और इनको प्लस कर दिया। आंसर कितना आ गया? 169। चेक इफ माय कैलकुलेशन इज करेक्ट। मैम एक बार दोबारा बता दो लास्ट वाला। ओके, हमारे पास Yes. 3 साइड्स हैं, आपने 3 साइड्स आइडेंटिफाई कर ली। यस मैम, उसके वो बाद तो समझ आ आपको गया। यस जो अगर क्यू पे बन रहा है हमारा 90 डिग्री पर, हम आर पे उसको हाइपोटेन्यूज करेंगे, ट्रायंगल करेंगे, और क्यू पे हम उसको बेस करेंगे और पी पे परपेंडिकुलर करेंगे। Are you actually उसके naming the बाद का vertices? समझा I लो। want you to name the sides, Archit. बेटा, her hypotenuse, perpendicular and base are the sides, not the vertices. और side का जब हम नाम बोलते हैं तो हम 2 points use करते हैं. So the side which is 13 centimeters, this side, this is your hypotenuse. इसका नाम क्या होगा? आर पी और Yes. पी आर। And base हमारा ये नीचे बन रहा है. क्यू आर। And this side over here is our perpendicular. पी क्यू। आपको इनकी लेंथ नजर आ रही है? यस मैम। अब जब मैंने कहा कि आपको इनका स्क्वायर करना है, साइड का स्क्वायर करने का मतलब जो उनकी लेंथ है ना, उनका स्क्वायर करना है। अगर मैं बोलती हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करो, तो हाइपोटेन्यूज ये है, आपने अभी आइडेंटिफाई किया है। आपको नजर आ रहा है कि फिगर में उसकी लेंथ कितनी लिखी हुई है? यस मैम, 13 मल्टीप्लाई 13। आंसर कितना आ गया? मैम इज इक्वल टू 169। और बाकी दोनों जो साइड्स हैं, परपेंडिकुलर और बेस, आपको उनकी लेंथ नजर आ रही है? यस मैम। अब उनका भी स्क्वायर कर दो और फिर आंसर्स को प्लस कर दो। मैम परपेंडिकुलर और बेस दोनों को एक दूसरे के साथ प्लस करना है। स्क्वायर करने के बाद पहले स्क्वायर फिर प्लस। यस मैम, यस मैम। तो 12 का स्क्वायर आएगा 144, 5 का स्क्वायर आएगा 25, इनको प्लस करके आंसर कितना आ गया? इनको प्लस कर 169। मैम बात आपने 12 प्लस 5 लिखा, मैम यहाँ हमने 12 मल्टीप्लाई 12 किया। बेटा ऊपर स्क्वायर है ना, मैंने आपको कहा पहले आपको स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है, सभी का स्क्वायर करना है। 13 का तो कर दिया, यस मैम। 13 का तो कर दिया ना, 12 का भी कर दो और 5 का भी कर दो। मैम 12 का आएगा 144 मैम, और 5 का होगा 25। और इनको प्लस करना है, ये वाले जो 2 स्क्वायर्स आए हैं छोटे वाले, 169। आंसर मैच कर गया? यस मैम। Now this is what I have, this is what the property is. इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, कि जब हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा यू आर आस्किंग व्हाट दिस मींस, दिस इज इन शॉर्ट, h is the abbreviation for hypotenuse. Hypotenuse is a very long word, so we will not be writing down hypotenuse, we will simply write capital H. Capital H means hypotenuse, capital P is perpendicular, capital B is base. ठीक है, पूरा वर्ड नहीं लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख लिया। तो एक साइड पे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मैंने h का स्क्वायर किया, एज यू कैन सी। ऑन द अदर साइड राइट हैंड साइड पे मैंने किसका स्क्वायर किया है? p का और b का, मेरे परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर प्लस किया है। इज दैट करेक्ट? क्या है? जस्ट गो ओवर व्हाट वी डिड। अभी जो हमने ये कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन में मैंने क्या किया, आपको मैंने क्या करने के लिए कहा था? मैंने आपको बोला कि स्क्वायर्स निकालने हैं और प्लस करने हैं, राइट? लेकिन एक तरफ मैंने सिर्फ अकेला एक स्क्वायर निकाला, उधर किसी को प्लस नहीं किया, लेफ्ट साइड पे। ऑन दिस साइड क्योंकि वो हाइपोटेन्यूज था, राइट? h स्क्वायर अकेला है, h स्क्वायर अकेला है, और दूसरी तरफ कौन कौन थे? परपेंडिकुलर एंड e बेस। स्क्वायर एंड b स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन है बिकॉज हमने उनको ऐड किया था।
तो ये आंसर्स हमेशा मैच होंगे अगर आपके पास राइट ट्राइंगल होगा। आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री एंगल बन रहा है, अगर आप लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करते हो उसको अलग रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड अलग रखनी है, जो बाकी दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स प्लस कर देने हैं, तो आंसर्स मैच हो जाएंगे। I'll give you one more example and tell me if you can check. Let's take this triangle